डियर स्टूडेंट्स. सो सबका जो डाउट था अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट EGE. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to an isolated gaseous atom, right? It is the amount of energy released. This is from the point of view of definition, that it is the energy released. Okay, when an electron is added, this word is important. Electron is added means there is some electron affinity, right? Electron affinity or electron gain enthalpy. So when an electron is added to an isolated gaseous atom, this is the definition. Now, during the addition of an electron, energy can either be released or absorbed. Okay, it can be either be released or absorbed. Most of the time it is released, and sometimes also it is absorbed. We will see how it is so. So now, on which factors does this EGE depends? EGE depends on, first of the most important factor is electronic configuration, second is atomic radius, and third one is nuclear charge, right? Electronic configuration, all of you know, means what is the configuration according to the atomic weight or atomic number, according to the atomic number we write electronic configuration. Atomic radius means size from nucleus to the valence shell or outermost shell. And nuclear charge, what is the charge? +1, +2 or -1, -2, accordingly nuclear charge. All these three factors decides the EGE value. Most important is atomic radius, okay, because difference between the elements of a periodic table are their atomic number only. So therefore atomic radius is the main depending factor of EGE. Now we are dealing with, first of all we will deal with metals. What happens in metals? Sorry for this black mark. For metals, EGE is positive. Okay, electron gain enthalpy is positive. Why? Because they require extra energy to add an electron. For metals, EGE is positive because they require extra energy to add an electron. Why extra energy? See, for example, sodium. Sodium can acquire its stable electronic configuration 2,8 by donating electron. Okay, but here we are telling him to acquire electron, means to make a configuration of 2,8,2 by addition of electron. Okay, it is having very less tendency, but we are telling sodium to do so, to form a configuration of 2,8,2. So it will absorb energy, right? It will absorb energy to add an electron, and that absorbed energy we calculate in the form of positive charge, right? Positive values will come. Okay, similar will be the case with magnesium. It is also having a tendency to attain stable noble gas configuration of 2,8 by donating 2 electron. But when we say about EGE, 2 electron to be added, 2,8,3, if we want to do the configuration, an extra energy will be required, and that energy it will absorb. Okay, and the values will be positive. So we conclude that for metals energy is absorbed, and for energy absorption we get positive values, right? These positive values. Okay, for comparison I am telling you ki what happens for metals, energy is absorbed, and for non-metals what happens? Energy is released. Okay, for non-metals energy is released, and so the values of EGE for non-metals it is negative. Okay, you are getting the difference. For metals energy is absorbed because already it is having a tendency to lose electron, but then to it have to accept an electron, so it will absorb energy, and the energy absorbed values will be positive. And for non-metals energy will be released, and the values will be negative, EGE values, right? Again, some theory part. For non-metals, as we move down the group, the number of shell increases, right?
Here we are dealing with oxygen family, oxygen, sulfur, selenium, tellurium. Down the group, what happens? Number of shell is increasing. That means atomic size is increasing. That means distance between the nucleus and valence shell is increasing. So therefore, this reduces the force of attraction between the positive nucleus and the negative incoming electron near to the valence shell. Okay, valence shell में ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. एक और हम इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, राइट? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? हेंस लेसर एनर्जी इज रिलीज, राइट? लेसर एनर्जी इज रिलीज. वाई? बिकॉज एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. वाई? बिकॉज साइज इंक्रीज हो गया. साइज इंक्रीज होने के बाद में क्या होगा? न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है दैट विल ऑल्सो गेट लेसन, मीन्स कम हो जाएगा. तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियर पुल इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा. इसी की वजह से क्या होगा? लेसर एनर्जी विल बी रिलीज एंड ईजी वैल्यू क्या होता है? डाउन द ग्रुप गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऑल बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से, राइट? अब हमारा एक्सेप्शन था कि फॉर सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हाट हैपन्स? ईजी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन. तो हियर some of the values are given, okay, from textbook I had taken. For oxygen the EG value is minus 141 kilojoule per mole. For sulfur it is minus 200 kilojoule per mole. And down the group C, minus 195 for selenium, minus 190 for tellurium and minus 183 for polonium. Okay, तो माइनस की टर्म्स देखो कैसी जा रही है. तो कंपेरेटिव टर्म कौन सी करना है? ऑक्सीजन की और सल्फर की. ऑक्सीजन की कितनी वैल्यूज है? माइनस 141 किलोजूल पर मोल. और सल्फर की कितनी है? माइनस 200 किलोजूल पर मोल. ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो कैसी है? इट इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर, राइट? सल्फर की वैल्यू ज्यादा आ रही है, माइनस 200. नेगेटिव के टर्म्स में हम बोल रहे हैं इट इज हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू. Why it is happening? Because of the size, right? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2 एंड 2p4. सल्फर का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 16 होने के बाद में 3s2 एंड 3p4. So size, what about the size? See, 4 electrons in the valence shell, 4 electrons in the valence shell, but subshell is here 2p. 2p is nearer to nucleus. So nuclear attraction will be there and nuclear repulsion will be also there, right? Here it is away from the nucleus, so nuclear attraction will be there but nuclear repulsion will be there, right? पर किस केस में ज्यादा होने वाला है repulsion? In case of oxygen. Why? Because size is smaller. 2p सबशेल आ रहा है, यहाँ पे 3p सबशेल आ रहा है, इसलिए इस केस में लेस होगा, right? So values से according to the values we can decide this. So here conclusion comes. What is the reason? Size of oxygen is very small as compared to sulfur. Hence electronic repulsions are maximum. Hence an incoming electron does not feel much attraction. Right? जो incoming electron है उनको ज्यादा attraction feel नहीं होता है. किसमें? In case of oxygen. So therefore ये क्या देख रहे हैं हम लोग? Amount of energy release. More energy is released here. Here less energy is released, right? But here repulsion is maximum. Same case किसके साथ में है? In halogen family, fluorine and chlorine also. Chlorine का have highest EGE value, right? पूरे periodic table में chlorine is having highest EGE value. Same reason fluorine और chlorine का size compare करेंगे. इसमें भी हम लोग 2p सबशेल जो रहेगा इसका वैलेंस शेल रहेगा 2p5, इसका वैलेंस शेल रहेगा 3p5. सेम टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑल्सो. इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो वी विल कंक्लूड कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू लेस नेगेटिव है, यहाँ पर फ्लोरीन की वैल्यू लेस नेगेटिव है. ओके, सो दिस इज आई थिंक दिस इज अ फेयर एक्सप्लेनेशन. अब शायद आप लोगों को समझ में आया होगा प्रॉपरली कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सेप्शन. एक्सेप्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, सो मेक इट अ पॉइंट कि why these exceptions is occurring. Okay, thank you.